Um, Let me check if I'm live. Okay, fine. And is this connected? So, hello and welcome everyone. Uh, am I audible? Just let me check once. Cool, cool. So, hello and welcome. A very good evening to all of you, those who are present. And today we'll be moving on to a new topic overall. Uh, so we are finally moving on from the you know, linear data structures to non-linear data structures. And what we'll be studying today is called trees, right? So we have a book trees. Let's add page and we'll get started. So today we'll be going on with what trees are, a bit concept about trees, how do you visualize trees and stuffs like that. And also we'll be discussing questions and how to approach similar kind of problems that we are going to face in the coming time. So let's get started with trees. Okay. So what are we gonna discuss today? We'll be discussing some concepts. Okay. Now these concepts will include, the introduction to trees. Then we will go and learn what are the types of trees, different types of trees. Okay. Some of the traversal techniques that we are going to learn today. So traversal and visualization for sure. So visualization we'll be learning today. Some of the properties also for trees that are, you know, quite necessary sometimes to solve certain objective questions, right? Now, after once we have discussed about the concept, so we had three problems that have to be discussed today. If we have time, we'll discuss all the three, but we'll discuss one for sure. And since it has various different algorithms, so we'll have to discuss all of that, and that would be inverting a binary tree, inverting a binary tree. Okay. So these are the things we are going to discuss today. Let's get started with the concepts or introduction, whatever you say, right? So first of all, what is the picture that you form when you hear of a tree, something like this kind? But if you look at it, the skeleton of the tree, so it would be something like this. I am not a good painter, but yeah, this would be your root, something like this, and then you'll have multiple branches, right? So these are your branches, something like that. These these are gonna be your branches, and let's change the color, of course, to green. And these are your leaves, actually. So how does the leaf come out? It comes out with the branch, right? The same analogy is what is making this complete theory of trees is based on a tree itself. Okay, we have root, we have multiple branches, we have trees, sorry, we have leaves, right? Leaves. Okay, so let's discuss how this, not this tree, but how our tree will look like. Okay, so our tree would be the root, and we have these are called the branches. Okay, these are the branches. Okay, so as I wrote already, these are the root, also called, these circles are also called nodes. Okay, so we are also discussing something called nodes.
So nodes particularly are the entities that are, that forms the basis of the tree data structure, right? So these are nodes. The circle, all the circles that you see here are nodes. All the lines that you see here are edges. Okay, these are edges. Cool. We discussed root. Now these are the branches, or you can call the branches of trees. Okay, these are the branch, and so if you move from here to the leaves, what are with the leaves that should be in this case? These, right? The ending portions. These are the leaves of the tree, right? Where the node ends, and there are no further um, subtrees in it. Okay, we'll be discussing subtrees. So these are the leaf and overall leaves. Okay. Now this is a pointer that goes left, and that forms a left subtree. So now what is a subtree? A subtree is nothing but a tree that is inside a tree. You can say, this is the left subtree. Okay, this is left subtree. Okay, because after, if you check like with the perspective of the root, this is the left subtree, right? And similarly, this would be the right subtree of this particular root, right subtree. And these are not only the single subtrees that you can find here. Okay, if you consider this as one subtree of this particular node, that is also correct. Okay, so as we have seen in the case of array, that we have multiple subarrays inside a single array. So this is how left subtree, right subtree kind of a concepts are discussed. And as I told you, this is the left pointer that points to this particular node, and similarly we have a right pointer that will point to that particular node, right? Mhm. So kind of a chronology or understanding how the tree structures is formed. Now, the terms are also called as parent and child nodes. Okay, parent nodes. So you this is obvious. What will be the parent node? For these two particular child, what will be the parent? So if you have ever drawn a family tree, you write your mother's name, father's name, and this is your child, right? This that is you. In this case, if you revert back, so you're if let's say two are born from single entity, not a parent, single entity. So these would be the this would be the parent node, right? And the lower nodes that are forming after the parent node are called child nodes. Okay, this is a parent node, and we have child nodes that are forming through the parent. You can say this is a child node. You know, cool. So in this case, this root will be a parent to these both, right? These both, and so on. You can also call a thing like ancestor, the immediate ancestor. So the immediate ancestor to these both child would be this y, right? X and x. This is the immediate ancestor, and you can this is the thing which you can relate, obviously, right? These are the things that are to be discussed in a tree data structure. I hope I'm not missing anything. I mean the terms that we are going to use, and we'll also have something called height of a tree. So imagine this to be a tree. Okay, this can also be a tree. First of all, let me write what okay, in one box. Let's write some basic things. So what trees are actually? These are non-linear data structures. Non-linear, how? Because it forms a hierarchy, right? Okay, no, non-linear data structures have these multiple things that we have discussed above, and we'll also write the types here for a bit summary kind of stuff. So if this is a tree, so what are we calling the height of the tree? This particularly is the root. So this height here is level 0 of the tree, okay? And this height here is level 1, and this height here is level 2. So
Always remember we are starting with the root of the tree and we are catching the root to be level 0 and then we are moving on by incrementing level one by one, right? So these are the levels and hence the height of the tree. So if someone asks you that what is the height of this particular tree, so height of the tree would be 2, right? Now something is there is something that is known as depth of a tree. So if you see the depth of a tree, so in to reach the leaf node, okay, reach leaf from any particular node. Why am I writing any particular node? Because not it's not necessarily that we have to consider depth from the root only. If it is said that depth is from the root, then we have to take the root in the consideration. But suppose we are mapping depth based on this particular node, this particular node. So how many steps can you reach the leaf of the tree? So just one step, right? So the depth with respect to this particular node is 1. Okay. With this, of course, is 2 because one step here, second step here. So 2, right? So reaching the leaf with any particular node is called depth of the tree. Okay. Yeah. So these are the things that we have discussed. Now let's check a bit use case that we can have of a tree. A very popular use case which we all have seen is file directory structure. Okay. So if you see how a file is organized. So there is a folder, right? Let me make the folder like this. You understand, this is a folder, okay? And then you have particular files in it, okay? And then you may say again have a folder back, and then inside this you may have particular files in it, okay? Like this. So what is this? This is nothing but a tree structure, right? This may be the root. These are the 3 children, and then inside this particular children we have 2 more children, okay? And if you see, let me show you. If you just write cmd and anywhere if you type tree, so you see this is what we are getting, okay? So inside my you see these particular folders I have stuffs which generally forms a tree, right? So inside this type set fallback I have this stdlib and then I have async io, right? Async io collections stuffs compression के अंदर zstd है वगैरह वगैरह. So this is a tree, right? So this is one example or one very important use case that we do with the tree data structure. Cool. Now let's in short discuss some of the properties of tree. The major properties are to be discussed in college classrooms or via your interest that comes up within you, right? So one very important property that tree data structure follows is the number of edges that a tree has. Okay, number of edges. So if a tree has n number of nodes, then the number of edges will be n minus 1. Okay, you can prove it via mathematical induction. See, if you have one vertices, the number of edges is 0. If we have two vertices, one vertex, so 0. If you have two vertices, then the number of edges will be 1. If you have 3, then the number of edges is 2 and so on and so forth. So you will get n minus 1. Okay, that is one thing. Another thing is handshake lemma. Handshake lemma is just two vertices, handshaking with each other. Okay, this is one, this is other, and you're shaking hands. When so how this handshaking lemma is defined mathematically? It's degree of every vertex. Okay, we'll come to what degree is. The degree of every vertex from I is equals to 1 to number of vertices. This is nothing but 2 multiplied by number of edges. Okay, so handshaking lemma. So now what is a degree of vertex? So degree is number of connections or number of other vertices that a particular vertex is attached to. Okay. Number of connections or an edges that go out of a particular
uh, vertex. Okay, go out, come in. That's a different matter because we have some things called in degree and out degree. Okay, so in degree is everything that comes into a particular vertex, and out degree is everything that goes out from a particular vertex. Out degree is something like this. Okay, everything that goes out from a particular vertex. In degree is everything that comes into a particular vertex. Okay, so these are some of the terms that we are gonna use. And this is of course the number of edges. This mod symbol is signifying the number of edges, the absolute value. And is there anything left? I just came up with something. Hmm, that is it. Okay. So we have discussed height, we have discussed depth, and yeah, this degree. One thing that we can discuss is degree of a node. So particularly when we are like talking about trees, what degree of a node is? Suppose this is one node, and we have two here and three here. So degree of a node. So with respect to this particular node, that is the root in this case, what is the degree? If you can guess, that is 2, right? Because it has two different subtrees that are originating from this particular root, right? Degree of a node is a number of subtrees that are originating from a particular node. So in this case, we have 2. In this case, we have 1. In this case, we have 3. And in these cases, we have 1, 1, 1 each, right? Because there are no subtrees that are, in this case, there is a null pointer because it's the same things. You see, as we have did things in a linked list, we have, we had nodes and that pointed to other nodes. Now this, in this, what we'll do is we'll have a node, but this will point to two different nodes, you know, or three different nodes, and so on and so forth, right? That we'll be discussing in the types of trees again. So if you have understood linked list, this is gonna be very simple, and we'll just exploit how to use, search algorithms and queues and stacks, okay, and recursion. So if you have understood the funda of linked list, this linked list, yeah, you can have multiple nodes that are connected to a single node, and you form a tree. It's as simple as that. Cool. And since linked list was ending with null, here also every node that ends has a null pointer at the end. Okay. So this is what the concepts tell us. Moving on, let's talk about the different types of trees. So one type that is going to be very common with anything that we encounter, and that will be binary tree. I hope many of you have heard this term before, binary tree. Okay. As the name suggests, binary, that means two. So in this case, every node will have a maximum of two children. Mind you, I'm saying maximum of two children. So children can be 0, 1, 2, right? But it has a maximum of two children. Okay. So this can be a binary tree. See this. Cool. This has two children. This has two children. This has zero children. This has zero and this has zero. So these are particularly the leaf nodes. If you say I'll mark it in green, these are the leaf nodes with zero children, and the rest of them has two. Cool. Now let's discuss. There are certain types of binary tree. That is um, complete binary tree. One is fully binary tree. One is, combining these two, we make fully complete binary tree. And we have a balanced binary tree. Okay, balanced binary trees. Okay,
So let's first discuss what fully binary trees are. So fully binary tree says that every node will have either zero or two children. Okay, either zero or two children, not one. Cool, not one. So if you can make a drawing of a fully binary tree, this can be a fully binary tree. Even this can be a fully binary tree. Cool. Now when we talk about complete binary tree, so it tells us that the number of the children that is in the leaf sides, okay, the children on leaf should end up at left. This is very important, at left. Okay. What do I mean when I say at left? It is that when you are starting a binary tree like this, तो इसको अगर देखें तो the children or the leaf nodes are at the complete left, right? So if you start filling the leaf nodes, you start filling it from the left. So yes, this is a complete binary tree. This is a complete binary tree. This is a complete binary tree. What is not a complete binary tree is this, because the left is not filled up, right? So this is not a complete binary tree, or something like this is not a complete binary tree. This is not a complete binary tree. You need to fill everything from the left first, okay, and then fill the right. If you fill or not fill, that is your choice, but you start filling it from the left, okay, especially the leaf nodes. Now, what is fully complete binary tree? So you combine that the child should be on the left and it should have either zero or two children, okay. Fully complete binary tree is something like this. इसका सारा nodes ऐसा filled रहे, ठीक है. Every node has zero or two, okay. Hmm? So this is something as called as a fully complete binary tree. What is a balanced binary tree? This is advanced data structure that we'll read when if we somehow read AVL trees and stuff. What binary trees, balanced binary trees does is it automatically balances the tree to be of maximum nodes, to be of the minimum height. You can say, this has minimum height or say depth. You know it automatically balances itself to have the minimum height. Okay, so that is called as a balanced tree. Cool. We have discussed the types of binary tree. Now we'll be moving on forward with the traversals. Okay, the traversals. So I am just giving a brief idea of traversal here. What we'll be learning it through the questions only. Okay. So in a tree, in any kind of tree, we can have two types of searches majorly. Okay. First one is BFS, that is breadth first search. Breadth first search. And the second one is DFS, that is depth first search. So these are the two types of searching algorithms that we are going to use, BFS and DFS. Now let's in short see what BFS and DFS is. So suppose you are given a graph like this, or a tree. Let's just stick to trees right now. This is a binary tree only. Okay, fine. So what a BFS algorithm says is you first check the breadth. Okay, मतलब तुम level wise जाओगे ऐसे ऐसे. ठीक है. This is BFS. ठीक है. इसको rotate कर देते हैं. That would be better. Can we? I don't know if we can rotate it. Anyways, fine. So this is um
what BFS means. मतलब तुम पहले root को पकड़ोगे. Okay, you catch the root, you do stuffs according to that, then you move to your left and right. Cool. And then you catch this, you do stuffs, and then catch this, and you do your own code block execution inside this particular thing, and so on and so forth. After catching left and right, you go on to have this particular level. So you hold on this, hold on to this, hold on to this, and this, right? But in depth first search, what we do is we search the depth first. Okay, this time I'm gonna draw it vertically. So in depth first search, say this is your particular tree. So depth first search, of course, starts with the root, but how it traverses the tree, it first goes to the left, again to the left. Okay, so तुम पहले ये डेप्थ देख रहे होते हो, ठीक है, ये डेप्थ पूरे लेफ्ट 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 गए, अगर आगे है तो आगे भी जाओगे, you carry on till you have, till you reach the null pointer. Okay, तो तुम पूरा डेप्थ देखते जाओगे. Once you are done with this, so you go to the right side. And how do we do that? If you see, just follow this particular point. You start with this, you go here, you go here, you go here. Okay, then you fall back and then go right first. Okay, then you fall back, then you go right here, then you fall back, then you go right, and then you again first go left. जब भी लेफ्ट जाने का मौका मिले हम पहले लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद राइट जाएंगे. ठीक है, वही फंडा है, बेसिक फंडा, कि जब जब तुमको लेफ्ट का ऑप्शन है, यू गो लेफ्ट. फाइन. That is depth first search. Okay, this is DFS. So these are the two data like searching algorithms that we can use while we are traversing in a tree. Cool. And deleting nodes and inserting nodes is as simple as we did in linked list. If certain criteria have to be matched, then things get complicated, and that will look as we do the questions. Okay, so for now I guess we are good to go and tackle our first question that we have, right? Just quick recap what we have discussed about it: the height, the depth, the nodes, and most importantly the traversal and the types. Okay. Hmm? Majorly, if we work with as a complete binary trees when we have things stuff on the left side, left end of the graph. Okay. So now let's move on to the first question of the day that we have, and that is to invert a binary tree. Okay. Yeah, this question. So you see, given the root of the binary tree, invert the tree and return it true. तो अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करें तो हम यहाँ समझ जाएंगे बेटर कि this is nothing but a mirror image. If you just notice, this is nothing but a mirror image, right? You're just inverting. Left वाले को right पे बना दो, like 6 goes to the right, 9 comes to the left. Okay. And since you have to invert this also, so the 7 comes here, 2 goes here. That is what we are talking when we are talking about the inversion of binary trees. Okay. This is a mirror image. Okay. That is what we have to do, and we need to return the root. Now, if you just take a quick look at this particular point, the definition of a binary tree node that lead code provides us, it says that there is a struct that we are having, which is called tree node, and it has a value. Of course, the nodes have a value. Okay, and tree node points to left, tree node points to a certain tree node at the right. Okay, so हमारा ये एक नोड है जिसके अंदर वैल्यू है, और ये एक ट्री नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर कुछ और वैल्यू है, से वैल्यू डैश, एंड दिस इज एट द लेफ्ट, and we have another pointer that points to a particular tree node. Okay, that is basically the address, pointing to the address of this particular tree node, which again has a value. Cool. This is what the definition says us. And if you write certain functions like tree node and the parenthesis,
Then we assign value 0 by default, and the two pointers will go on to become null pointers. Okay. If we have provide certain value to the function, then as per the parameter, it takes on the value. And you can also provide the left and the right pointer that you need to point to a particular node. As simple as that, what we have did in the linked list. What changes here is the traversal. Okay. पहले हम लोग हेड पॉइंटर के आगे जाते 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 रहते थे, अभी रूट को आगे लेके जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स चेक कि हाउ वी कैन इन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. तो मान के चल कि हमारे पास इन जनरल टर्म्स वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी. तो हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज रिकर्शन. क्योंकि रिकर्शन कैसे चलता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. इट गोज हियर, इट गोज हियर, इट्स चेक इफ द नेक्स्ट पॉइंटर इज नल. इफ इट इज नल, इट falls back, comes to the right, falls back, comes to the right, goes left, falls back, comes to the right. Cool. This is how recursion works. So we are covering every node, right? This is one thing that we can do using recursion. And of course, this is DFS because it first traverses the whole depth of this. Okay. Or what we can do is we can use something the breadth first search. मतलब A को जब हम लोग encounter करते हैं, उसके बाद क्या करो कि C और B को स्वैप कर दो, पूरा सब ट्री को. ठीक है. सब ट्री बोले तो अगर हम C और B का नोड स्वैप करेंगे, तो एज आई टोल्ड यू, नोड्स के साथ एक पर्टिकुलर नोड्स के साथ उसका नेक्स्ट पॉइंटर्स भी अटैच्ड है. ठीक है. एक पर्टिकुलर स्ट्रक्ट में अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर ट्री नोड में उसका पॉइंटर्स भी अटैच्ड है. तो अगर तुम बी को पकड़ के पूरा स्वैप करते हो ना सी के साथ, दैट डजंट मीन यू आर जस्ट स्वैपिंग द वैल्यूज, बट यूर स्वैपिंग द होल नोड्स. सो सी अगर स्वैप किए, तो सी के साथ हमने एफ जी को भी स्वैप किया. ठीक है. एंड देन हमने बी को जब स्वैप किया, तो बी के साथ हमने ई और डी को भी स्वैप किया. ठीक है. और इसके बाद क्या कर सकते हैं, ए को तो कैच किया था, फिर हमने स्वैप कर दिया. अभी सी पे आते हैं. अभी एक एक करके चल रहा है, तो ये क्या, कौन सा सर्च हुआ, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च हुआ ना, बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग लेवल वाइज. ठीक है. ए हो गया, अभी सी होगा. तो जब सी करेंगे तो क्या होगा कि दिस एफ चेंजेस टू जी एंड जी चेंजेस टू एफ. ओके. दिस, and then we move on to B, and then we do the same stuff here, that is change it to E and D. Okay. And now just give a quick check whether these are the mirror image of each other. It is, right? And when we go on to the third level, if we go on to the third level, we check G. So what G points to? G points to null. Okay. So whenever we get null, you, even if you swap null with null, you have it's in not exactly defined well. Okay. So no need of swapping again. Until unless we have values in this, we'll swap, or else we won't. Okay. So this is what type of search we have. This is breadth first search. Okay. अभी implement करते हैं. देखो, breadth first search जो होता है ना, you can implement using queues. ठीक है. General terms में you can implement using queues, sorry. And the depth first search जो होता है, उसको we can implement generally using stacks. How? Because you see, in this, whenever we encounter a particular node, we put it into a queue. Like we encountered A, we put it inside a queue. Let the queue look like this. Okay, like this. Okay. A को डाले, तो we put it inside this particular queue. And then what we can do is pop out A. Okay, pop out A and swap the nodes that they are pointing to. Okay. So in queue, what we can do is first make a queue. First of all, make a queue. Then second, that you pop the front of the queue, mind you, front of the queue. Then third, what we can do is swap the elements. Okay. And then you pop it until this queue is empty. So A को डाला, और अभी तो पॉप किया, क्यू एम्प्टी है, बट आगे का स्वैप कर दिया. और स्वैप करने के बाद हमने इस सी और बी को डाला. ठीक है. तो पुश नेक्स्ट चिल्ड्रंस.
सो इफ यू सी पहला पहला इटरेशन क्या होगा, ए जाएगा, ए निकलेगा, और नेक्स्ट टाइम हमारे पास सी और बी बच जाएगा, ठीक है। अभी फिर सी जब निकालेंगे तो सी के साथ जी और एफ एंटर कर जाएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, यू आर पॉपिंग दिस, स्वैपिंग दिस, ठीक है। स्वैप किए किसका, चाइल्ड को, दोनों के चाइल्ड को, और दोनों के चाइल्ड्स को पुश किए, तो जी और एफ, तो सी भी निकल गया। अब बी निकालेगा, अब जब जी और एफ के निकलने का बारी आएगा तो इसका कुछ चिल्ड्रन ही नहीं है, राइट। सो यू जी एंड एफ, यू कैन जस्ट पॉप आउट विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। ये ये पर्टिकुलर पूरा प्रिंसिपल चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम देखते हैं यूजिंग क्यूज, ठीक है। सो क्यू को यूज करके what we are doing is breadth first search, that is level based, okay। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज है कि अगर रूट में कुछ ना हो, इफ नॉट रूट, देन यू कैन सिंपली रिटर्न नल पॉइंटर, राइट। और अगर ऐसा ना हो तो एक क्यू बनाएंगे। क्यू डेटा स्ट्रक्चर वी हैव एन लाइब्रेरी इनसाइड सी प्लस प्लस, जहाँ पे जैसे हम लोग सेट के लिए किए थे, स्टैक के लिए किए थे, वैसे क्यू के लिए क्यू करके इसमें क्या डाल रहे हैं हम ट्री का नोड का पॉइंटर एड्रेसेस डाल रहे हैं ना। सो वी नीड अ ट्री नोड पॉइंटर, ओके, and then we need to name it, let's say QU, okay, and then we are first of all pushing the root, uh, so root push किया, अभी a push किया है, and then we'll have while q is not equal to empty, so while not q dot empty, जब तक q खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें ये काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, we need to first of all पॉप किसको करना है, ठीक है। एक एक ट्री नोड ले लेते हैं कि ट्री नोड पॉइंटर a particular node that is equals to a, in this case a, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, दैट विल लाई इन द फ्रंट वाला क्यू के फ्रंट में लाई करेगा, ठीक है। तो अभी हमने हमने क्या किया कि नोड के अंदर अभी रूट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर नोड के अंदर अभी रूट है, तो अभी क्या करना है, रूट के जो नीचे का चिल्ड्रन है उनको स्वैप करना है, ठीक है। सो वन थिंग दैट वी कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉप दैट पर्टिकुलर नोड, ठीक है, और फिर स्वैप। अभी हमने नोड एक क्यों बनाया है यहाँ पे, बिकॉज विल नीड ना कि नोड के लेफ्ट को और राइट को स्वैप करना है। स्वैप हो गया। स्वैप क्या है, स्वैप इज अगेन STL, built-in utility in C++ standard library used to exchange the value of two variables, okay। तो जब तुम स्वैप किए हो दो वैल्यूज लिख के, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट को और राइट के एड्रेसेस को, यू सी, इसके एड्रेसेस को स्वैप कर रहा है, इन द सेंस कि पूरा सब ट्री को ही स्वैप कर देगा वो, है ना। यू आर एक्चुअली स्वैपिंग swapping the whole subtree, cool। Now once we have swapped it, what we gonna do is pushing the next children's, right। So if नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, सो क्या करो, क्यू डॉट पुश, सॉरी, क्यू डॉट पुश नोड के लेफ्ट को, ठीक है। और या तो अगर नोड का राइट एग्जिस्ट करता है तो सिंपली क्यू डॉट पुश नोड का राइट वैल्यू, राइट, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा है। दिस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च ओनली, ठीक है। लेवल बेस्ड हमने एंटर करा रहे हैं क्यू के अंदर, और एक एक करके पॉप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब देखो, अगर जब भी लास्ट वाला नोड आएगा ना, ये जी और एफ जो हमारा आ रहा था, जी और एफ आएगा, साथ में जब बी काटेंगे तो हमारा ई और डी आएगा, ठीक है। तो जी और एफ और ई और डी के लिए क्या होगा, नोड तो जब जी असाइन हुआ, ठीक है, नोड को हम लोग जी माने, अभी जी को सिंपली पॉप कर दिया, ठीक है। अब ये स्वैप नोड लेफ्ट और नोड राइट मतलब क्या, कि उसका नल पॉइंटर्स को ही स्वैप कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। और इफ नोड का लेफ्ट डज इट एग्जिस्ट, नो, तो अभी क्यू में कुछ जाएगा ही नहीं। तो जब जी को काटने का बारी आएगा तो यहाँ से कुछ एंटर किया नहीं हमारा, ठीक है।
And similarly, जब G कटेगा फिर F, E और D, and the queue is empty. Cool? You get it? Let's try running this. Oh, एक second. We need to return. Ah, this will give an error. Network connection. One second. Ah, we wait for a certain amount of time. Let's see. So this is what it says here also. Okay. Why is it taking so time? Yeah. See. ये तो बस इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट्स है, यू नो, दिस 4 इज द रूट, उसके 2 और 7, फिर 1 2 के साथ 3, मतलब इसको अगर एरे फॉर्म में देख ही लेते हैं, देखो क्या है उसका इनपुट और आउटपुट का फॉर्मेट क्या है। अगर यहाँ पे इफ दिस हैज टू बी रिटन इन द केस ऑफ एरे, तो क्या लिखेंगे, ये पर्टिकुलर ट्री का बता रहा है, ठीक है। इट विल बी ए, then we have children of a, that is a c b, then we have children of b, that is g and f, and then we have children of, sorry, C, and then we have children of B, that is E and D. ठीक है. So if you have ever studied about heap heap sorting algorithms or heap, then you know the array format is also given. So this is how it is connected. So A का C और B के साथ connection होता है, C का G और F के साथ होता है, then B का E और D के साथ होता है, ठीक है। वो फिर वही पेरेंट I/2 ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। दैट इज अ होल डिफरेंट केस। ये मतलब एक एनालॉजी यहाँ से समझ लो कि ये इसी फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, बस। लेट्स सी इफ इट रन्स। क्विक भाई, इट्स टेकिंग टाइम, इट विल रन एनीवेज। इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स क्विकली एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर बाय पेस्ट। हाँ, तो देख इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। पहले तो इसका तो कुछ लगता नहीं है, ऑर्डर ऑफ वन है। अभी while q डॉट एम टी, ठीक है, तो ये q डॉट एम टी कहाँ तक चल रहा है, तुम इसमें सारा ट्रैवर्स तो कर ही रहे हो, लेवल बाय लेवल सारा नोड्स ट्रैवर्स हो रहा है ना। सो दिस इज एक्चुअली दिस कोड ब्लॉक हियर टू हियर इज रनिंग फ्रॉम फॉर ऑर्डर ऑफ n, where n is the number of nodes, right? So overall if you see, the time complexity we have here is O of n. What is the space complexity? Since we are making a queue, so we are requiring space, the same space obviously, because again we are inputting every nodes that are there. Okay, so this was one approach, BFS का Q के साथ, ये यहाँ लिखते हैं BFS using Q। अभी दूसरा देखो अप्रोच क्या है कि दिस टाइम विल बी यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले देखते हैं यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में रिकर्शन काम इसलिए करता है क्योंकि इसका फंडा ही वैसा है, रिकर्शन वर्क्स ऑन द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ठीक है। पहले वहां जिधर तुम भेज रहे हो उधर ही जाएगा वो, मतलब तुम खुद से अगर इमेजिन करो इन शॉर्ट, ठीक है, अगर एक फंक्शन है फिलहाल और तुम फंक्शन को एक कॉल कर दिए हो, यहाँ बेस कंडीशन है जो भी है, तो यहाँ नीचे वाला एलिमेंट्स तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक ये कॉल करते रहे, है ना। ये बार 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 कॉल करेगा, इसमें फंसा रह जाएगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसका काम खत्म हो गया, जब ये बेस कंडीशन रीच किया। तो अगर तुम लेफ्ट जाने एक बार शुरू किए, तो तुम तब तक लेफ्ट जाओगे जब तक तुम्हारा बेस कंडीशन ना मीट हो जाए।
and that is what the is the actual case of depth first traversal. Okay, I'm telling you in depth कि क्या है ये depth first traversal. Okay. अब देखो रिकर्शन से हमारा कोड भी बहुत शॉर्ट होने वाला है. लेट मी जस्ट राइट द कोड तो समझ में आएगा. पहले तो बेस कंडीशन लिखेंगे कि अगर रो इफ नॉट रो तो तुम रिटर्न कर दो नल पॉइंटर. ठीक है. और हर बार अभी तो हमारे को एक रूट मिला हुआ है ना. देखो अगर ये वाला देखोगे तो ये इनपुट पहला वाला क्या है रूट के साथ है. तो हम पहले क्या कर देंगे रूट के एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे कि रूट के लेफ्ट को ओहो, और रूट के राइट को हम ऑलरेडी स्वैप कर दिए. नाउ वी नीड टू मूव टू द लेफ्ट. सो यू जस्ट कॉल बैक इनवर्ट ट्री, बट इस बार रूट भेजने की जगह रूट का लेफ्ट भेज दो. ठीक है. और एक बार ही लेफ्ट का हो जाए पूरा तब यू जस्ट इन्वर्ट ट्री अब राइट का भेज दो. एंड दैट इज योर कोड. इट एंड्स हियर. ठीक है. सीधा लास्ट में रिटर्न कर दो रूट. ये कैसे हुआ. लेफ्ट जाते जाएगा यहां से. इट ऑलवेज reaches left end first. Why is it taking too much time today. ओहो रो नहीं भाई रूट. ठीक है. एक बार ही लेफ्ट हैंड का बेस कंडीशन मीट होता है टिल द बेस कंडीशन इज met. गुड. जब तक वहां मीट नहीं होता वहां जा रहा है. अच्छा लेट I'll also tell you something more. ये भी हो जाएगा डोंट वरी. इतना वेट नहीं कर रहे हम लोग. ah anyways इसका आई वुड वांट यू टू मेक अ रिकर्शन ट्री ऑन योर ओन. ठीक है. इसका एक बार ही रिकर्शन ट्री बनाना. that how will the recursion tree look like. This is very important in order to get in order to get this kind of concepts you need to know how a recursion tree works. ठीक है. वो कॉल बैक तुमको आना चाहिए. कॉल बैक कैसे स्टैक में स्टोर होता है वो सारा आना चाहिए. ठीक है. अभी देखो डीएफएस के लिए हम लोग रिकर्शन पे हिट किए हैं. अभी रिकर्शन अगर हिट कर दिए तो तुम स्टैक भी हिट करोगे बिकॉज रिकर्शन वर्क्स ऑन स्टैक. सो वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट डीएफएस यूजिंग स्टैक. ठीक है. हाउ विल सी. इसको देखो पहले ये चला कि नहीं. फाइन. वेरी पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आई डोंट नो व्हाई बट ऑर्डर ऑफ एनी है और वही होना चाहिए. आ जा भाई. इट्स नॉट वर्किंग टुडे एनीवेज. दिस इज ऑर्डर ऑफ एन. ओके. जितना नोड्स है तब उतना दूर तो ऐसे 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 करके फिर वापस आके फिर इधर जाएगा ऐसे ऐसे होगा. तो वो पूरा जितना नंबर ऑफ नोड्स है उतना बारी होगा. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. ठीक है. अभी स्टैक पे आते हैं. तो स्टैक इज ऑफ कोर्स लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है ना. तो तुम स्टैक में क्या कर रहे होगे. हाँ. स्टैक में क्या करेंगे पहले की जब जब हमें वी नीड ए देन वी नीड बी देन वी नीड डी. ठीक है. तो वी हैव अ स्टैक लाइक दिस. ठीक है. सबसे पहले हमने ए डाला. अभी ए को डाला है और फिर दोनों को पहले स्वैप किया. ठीक है. बी और सी को. यू नो लेट मी जस्ट राइट द कोड देन यू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं इसमें. कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता है हम पहले कर रहे हैं कि स्टैक से पॉप कर रहे हैं. मतलब ए को हटाएंगे. दूसरा क्या किया स्वैप किया बी और सी को. ठीक है. ये स्वैप किए और फिर बी और सी को इसी सेम स्टैक में डालें. तो मतलब कि ए जब हटा और बी आया सी आया. ठीक है. अभी नेक्स्ट बी और सी के बाद क्या होगा जब स्टैक से पॉप करेंगे. सो वी आर पॉपिंग सी. ठीक है. एंड देन वी गो एफ एंड जी.
या फिर एक काम करो, बी और जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, पहले सी डाल देते हैं, तब हम लोग लेफ्ट जाएंगे इनफैक्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट जाने का सोच रहे हैं तो हम लोग पहले क्या किया, राइट वाला पहले डाल देंगे, सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तुम लेफ्ट पहले डालो, राइट पहले डालो। अभी हम लोग बी और सी इसमें डाल चुके हैं, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम पॉप करोगे ना यहाँ पे इंसर्ट चिल्ड्रन, इट इज क्वाइट सेम एज क्यू। ठीक है, तुम देखो तो वो पूरा ही सेम है, बट इसमें फंडा ये है कि क्यू में सी निकल जाता, इस बार बी निकलेगा ऊपर वाला। तो पहले ए के बाद क्या किया, बी को हटाया। अभी बी को हटाते साथ हमारे स्टैक में क्या आ जाएगा, डी और ई। अभी तुम देखो सी फंस चुका है, सी नहीं निकल रहा है ना। वंस यू नो दैट सी इज स्टक, ई और डी लिखो। So once you know C is stuck, you'll be removing D. तो अब तुम देखो पहले A हटा है, this is one, this is second removal, this is third removal. If you check A, B, D, first, second, third, this is nothing but वैसे वो recursion वाला principle, call back ही हो रहा है। अब जैसे D हटेगा, तो is D having anything here? No, null pointer. तो हमें कुछ पुश नहीं करना, अबर जो हटेगा वो हटेगा E। तो मतलब क्या हुआ, 3 के बाद तुम B पे फॉल किए और फिर राइट साइड पे आए, दिस इज 4। एग्जैक्टली हाउ रिकर्शन वर्क्स। ठीक है, 1 2 3, once you are done with this, a base condition is met, you fall back to B, then you go right। ठीक है, अभी राइट में गए, फिर यू गो लेफ्ट, बट यहाँ लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो तुम E को हटाओगे। नाउ यू मूव बैक टू B, देन यू मूव बैक टू A। गुड, नाउ दिस इज फिफ्थ। पांचवा पे भी यही है, पांच एक्चुअली यहाँ ना लिखो। अभी ए को मूव करने के, यहां से ए गया, अभी ए के राइट पे आओगे तुम। ठीक है, ए के राइट पे क्या है, सी। तो अगर तुम सी हटाए, अब जैसे तुम सी हटाओगे, तो सी के साथ क्या आ रहा है, पहले तो एफ आएगा, बट वी आर टेकिंग पहले राइट लिख रहे हैं, तो जी आएगा और फिर एफ आएगा। ठीक है, अभी जी और एफ आया, द नेक्स्ट टाइम यू मूव, remove something that is from the top of the stack, what are we gonna remove, we are gonna remove f। ठीक है, so this is sixth and this is seventh। अब एक बार तुम इसको रिकर्शन वाले ट्री के साथ जो बनाओगे उसके साथ मैप करना। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इज गोना वर्क। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग, कैसे हमने स्टैक को यूज किया इन दिस केस, सेम फंडा। ठीक है, अभी हाँ ये देखो आ गया, तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन है। okay. और वही आई गेस मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकोगे तुम। बहुत लोग क्या करते हैं 100% सॉल्यूशन में ना, और खुद से ही वो लिख देते हैं कि इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू शो इट टू बी 100%, सो वो वहां चला जाता है। डोंट वरी, लेट्स मूव ऑन एंड राइट द सेम थिंग फॉर स्टैक वाला कोड। स्टैक के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम चेक करोगे कि अगर रूट है ही नहीं, देन यू सिंपली डॉट नहीं भैया रूट, देन यू सिंपली रिटर्न null ptr। और नहीं तो तुम एक स्टैक बनाओगे। हाउ आर वी क्रिएटिंग स्टैक, स्टैक ट्री नोड पॉइंटर। ठीक है, और तुम नाम तो कुछ भी दे दो, एस टी। नाउ एस टी डॉट पुश, यू आर पुशिंग द रूट। अभी सेम चीज, while stack is not empty, so while not st dot empty, told you this returns a boolean function। You can check, if you haven't seen, you can check the stack video that we have discussed, and this three, these three जो लिखे हैं, सिंपली वहां जाके लिख दो कि सबसे पहले तो एक नोड को, सिंस हम लोग को वापस से ट्रैवर्स करना है, तो इसको रिकॉर्ड करके रखना होगा। अभी स्टैक का कौन सा एलिमेंट हम लोग देख सकते हैं, टॉप वाला। ठीक है, तो st डॉट टॉप, तो अभी नोड में आ गया है, अभी हम हटा सकते हैं बिंदास। तो st डॉट पॉप हट गया, अभी स्वैप कर दो। व्हाट आर वी स्वैपिंग, वो जो नोड हमने ले रखा है उसका लेफ्ट, और उसी नोड के राइट पे। एक बार ये कर दिया, इफ पहले हम लोग राइट डाल देते हैं। ठीक है, नोड के राइट एग्जिस्ट करता है, तो एस टी पुश, हाँ नोड के राइट को पुश करा देते हैं। एंड इफ नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये सिंपली स्टैक में पुश करा देता है नोड का लेफ्ट।
और ये सब करने के बाद बचा क्या, is to just return the root, क्योंकि यहाँ ट्री नोड पॉइंटर मांगा है ना, स्वैपिंग तो कर लिया बट हमने सेम ट्री में किया है, कुछ चेंजेस तो किया नहीं, तो वही रूट को रिटर्न कर दो, एंड आई गेस दिस विल वर्क, लेट्स चेक। आज बहुत टाइम लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, दिस पर्टिकुलर थिंग इज टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम। कूल, दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। लेट्स सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है इस केस में। Today we had to discuss these also, but since we had to learn the concepts also, so I knew that this will gonna be discussed in the next class. So there is where we'll do the rest of the questions. No worries, it's fine. If you are learning, just go with the flow. And yeah, कम भाई क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, फिर पता नहीं इन लोगों का सॉल्यूशन क्या है, देखे जरा। दिस इज द सेम थिंग, ये रिकर्शन वाला है। दे आर जस्ट रिटर्निंग लेफ्ट वाला चीज, ये तो हमने किया ही रिकर्शन रिकर्शन में, पता नहीं फिर क्यों नहीं आ रहा। एनीवेज दिस इज नॉट what we need to look for. This is what we have, and we are good to go. Cool, just let's copy and paste. So you can correctly guess what the time complexity, space complexity for this particular code will be. Of course, this particular thing, order of n. As simple as that. Cool. So time complexity is order of n. Space complexity here is also order of n because we are using a stack. Okay. And this is DFS using stack. So this is recursion DFS using recursion. ठीक है, तो हमने रिकर्शन देखा, हमने डीएफएस देखा, हमने बीएफएस देखा, स्टैक देखा, क्यू देखा, आज बहुत कुछ देख लिया, आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन गुड बाय, सी या।